Now next we take configurational isomers. In configurational isomerism, we will take two types of isomerism. One is taken geometrical isomerism and second taken optical isomerism. So first we are starting here is geometrical isomerism. Geometrical isomerism. When we take geometrical isomerism, how this arises? It arises due to restricted rotation of groups or atoms around CC bond, or we can take several other bonds. We can also have in some cases carbon nitrogen bond or even nitrogen bonds. It may be because it is possible by having a double bond, pi bond, or ring structure. In the two cases, when the compound have pi bonds or have ring structure, then around the carbon-carbon single bond, rotation cannot take place. The phenomena of conformation will not take place. Without conformation, or no rotation around carbon-carbon bond, the compound can exhibit or a compound can show this geometrical isomerism. To show geometrical isomerism, we have one more condition, that the terminal groups or atoms, we can take terminal carbon atoms, should have different groups or atoms. If both the conditions are satisfied, then the compound can show geometrical isomerism. Like example taken here, when the compound have carbon-carbon bond, we can have alkenes or alkynes. Alkenes or cyclic compounds. So we can take here, we take double bond here. Now I can write here, groups can be taken here. Let us take here HCl, HCl, or in second case I can take the group HHClCl, or in last case I can take the group, let us say fluorine, chlorine, bromine, iodine. So in the given case they may ask you which compound can show geometrical isomerism. So in this case all three compounds can show geometrical isomerism. All the given three compounds can show geometrical isomerism. कैसे show करेंगे आप देख लीजिए. In this case the same group are on same side of double bond. What is same group? Two hydrogens on same side, two chlorine on same side. So such a arrangement is called as what? Cis isomer. In this case the same group or atoms on same side of double bond, then the compound will be cis. If the two groups same are opposite, then it is called trans. You can take the two group HH opposite Cl opposite, then it is called trans. So this compound shows geometrical isomerism, this compound shows geometrical isomerism, and this next compound also will show geometrical isomerism, but we cannot categorize in cis-trans isomerism. If you just can recall the phenomena of conformation in the ethane molecule, ethane can have staggered eclipse conformation. In that we have seen there is no bond breaking required of carbon to carbon, means rotation can happen and the compound can convert to different conformations. But here a cis isomer cannot become trans until we break some bonds.
that is configurational. To change configuration they need to break some bonds. कुछ बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ही आपका कंपाउंड एक से सेकंड फॉर्म में जा सकता है, डायरेक्ट नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है पॉइंट कि नहीं आ रहा है वाला? कैसे होता है? इफ आई टेक अ मॉडल वाइज अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, देखिए पहले आपका देखते हैं इसमें इथेन मॉलिक्यूल। इन इथेन मॉलिक्यूल वी टेक फिनोमेना ऑफ कन्फर्मेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, रोटेशन कैन हैपन। तो वी विल हैव फर्स्ट केस कैन टेक हियर eclipse conformation, rotation can result into staggered conformation. Conformation can be staggered or eclipse by rotation around single bond. Nothing, no bond is broken down. Energy required for rotation around single bond is very less and is available by the molecules on kinetic energy at room temperature. But if I take the compound in geometrical isomerism, see, in this case we have taken one pi bond. If it is taken example of, I have taken one, let's say hydrogen taken white atoms and chlorine taken green atoms. Chlorine is green, hydrogen is white atoms. That the structure of ethene molecule. Structure is planar. All the atoms are in same plane. To the plane of molecule, pi bond is perpendicular. We discussed in the chemical bonding also. And to the nodal plane of pi bond in the plane of molecule. Now we can take here. If you see the same group are on same side visible to you, then it is called cis configuration. Cis configuration. Now in this case cis cannot become trans because around this, अब देखो ना बॉन्ड रोटेशन आपका फ्री अलाउड नहीं है इसमें, बिकॉज ट्विस्टिंग इज पॉसिबल, थोड़ा ट्विस्ट हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट वन टू ट्रांस और ट्रांस टू सिस. ट्रांस क्या होगा इसमें? इफ आई टेक टू ग्रुप सेम अपोजिट, इट इज ट्रांस. ट्रांस कैन नॉट बिकम सिस और सिस कैन नॉट बिकम ट्रांस बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ये कैसा है? ट्रांस. द टू ग्रुप सेम आर अपोजिट. आपका पाई बॉन्ड है, द टू ग्रुप सेम H H white, Cl Cl green are opposite, is called trans arrangement. ये कैसा है? cis arrangement. दोनों कैसे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. डिफरेंस क्या है ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशन में? कि कन्फर्मेशन कैन चेंज फ्रॉम वन टू सेकेंड फॉर्म विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बट दिस कैन नॉट कन्वर्ट टू वन टू सेकेंड फॉर्म without bond breaking. Conformation can change without bond breaking, but this cannot change without bond breaking. समझ में आया? तो conformation can change without bond breaking one to second form, but geometrical cannot change without bond breaking from one to second form. So ध्यान रखेंगे point को. Now one more structure can be taken. If I take suppose all the four group different, let us say chemistry colorful, you have taken all the four group different. एक white, क्लोरीन आपका ग्रीन है, नॉर्मल हम लेंगे सारे व्हाइट के एच होंगे, ब्लैक सारे कार्बन है. यहाँ पे एटम डिफरेंट है, टेक दिस ग्रुप और ओनली ग्रुप वन ग्रुप और एटम. तो इसमें क्या होता है? ऑल द ग्रुप कैन बी डिफरेंट. सच ए कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट वी कैन नॉट ट्रांसफाई, वी कैन नॉट क्लासिफाई एज सिस ट्रांस. इसमें होता है EZ, आपको पढ़ाएंगे जाके EZ कॉन्फ़िगरेशंस. इसमें क्या होता है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, तो आपके ग्रुप फिक्स रहते हैं. इफ आई टू change the position here, so either I have to break the bonds. Suppose I break the bond, I make single bond, then I can do rotation, and after rotation only I have to arrange the group again. So without bond breaking we cannot convert one to second arrangement in geometrical isomer or in general for configurational isomerism. Conformation में कुछ आपको bond break नहीं करना पड़ता है, बिना bond break करे आपके structure change होते हैं एक से second structure में. बट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसके बाद ही आपके चेंज होना स्ट्रक्चर का पॉसिबल होता है. ठीक है, तो आपका हुआ सिस और ट्रांस. नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू, व्हिच काइंड ऑफ कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आई विल टेक वन एग्जांपल, वन क्वेश्चन बाय टेकिंग जनरल ग्रुप्स. आपको बताना है उनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू, यू हैव टू आइडेंटिफाई अमंग दिस कंपाउंड हाउ मेनी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, and if possible also indicate which is cis or which is trans. Try yourself. Now let's come on solution part. In solving this question, देखिए हमारे कंडीशन क्या है? नो फ्री रोटेशन अराउंड द CC बॉन्ड, पहला कंडीशन. सेकंड क्या है? द टू कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स. आपको दो कंडीशन देखनी है मेनली यहाँ पर, दैट कैन हेल्प यू. तो फर्स्ट में क्या है? बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, यस, बट वी कैन नॉट राइट cis or trans because we have no pair common. To write the compound in cis and trans isomerism or isomer,
दे शुड हैव एटलीस्ट वन ग्रुप और वन एटम कॉमन टू बोथ कार्बन्स। यहाँ पे कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं है, ए और बी, डी और ई, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें हम इसको सिस्टर ट्रांस में नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर क्या है, बी और बी अपोजिट आ गए, सेम ग्रुप अपोजिट में है, तो ट्रांस शो करेगा। ए और डी डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ए ग्रुप सेम होगा, कॉमन ग्रुप अगर आपका अपोजिट होगा तो क्या होगा, ट्रांस होता है। यहाँ पे क्या है, कॉमन ग्रुप कहाँ पे है, सेम साइड और डबल बॉन्ड, तो सिस। यहाँ पे क्या, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल बिकॉज वी हैव टू ग्रुप सेम। तो सच ए कंपाउंड व्हिच हैव टू ग्रुप आइडेंटिकल ऑन सेम कार्बन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लॉजिक क्या है, सपोज आपने इसको चेंज कर दिया है, ए और बी को उल्टा कर दिया तो भी सेम रहेगा, क्योंकि अभी क्या है, ए और ए अपोजिट, ए और ए अपोजिट, ए और बी अपोजिट। चेंज करने पर क्या होगा, ए और ए अपोजिट, ए और बी अपोजिट, पेयर सेम रहेगा ग्रुप का, तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड अगेन बिकॉज ऑफ रिंग रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। यहाँ सिंगल बॉन्ड है बट रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या होगा, ग्रुप सेम ऑन सेम साइड इज सिस, यस, ये भी यस होगा। ग्रुप सेम अपोजिट तो इट इज ट्रांस, ये यस होगा। इसमें क्या ग्रुप कॉमन है, बी कॉमन है, ए अपोजिट है, बी अपोजिट है, तो ट्रांस। यहाँ पर क्या है, ए बी बी डी, बी कॉमन है, सेम साइड पर है, तो यस एंड सिस। यहाँ पर क्या है, बी कॉमन है और अपोजिट में है, तो क्या होगा इसमें, ट्रांस। बी कॉमन है और कहाँ पे है, अपोजिट में, तो क्या होगा इसमें, ट्रांस अरेंजमेंट। दैट यू कैन टेक इन द गिवन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। So that's first point taken is geometrical isomerism in the compound having carbon-carbon bonds. Sometimes we can have carbon-nitrogen bonds or nitrogen-nitrogen double bonds. That kind of compounds also can show geometrical isomerism. Let us see some examples. So let us take some examples. We can take oximes. We have two types of oximes here. Two types of oximes. ये बनते कैसे हैं, लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। इफ आई टेक एल्डिहाइड्स RCHO इज एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद NH2OH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलामीन। दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइन्स, वन लोन पेयर, one OH. One lone pair. This both the compounds are called as aldoximes, come from aldehyde reactions. Aldoximes बनते कैसे हैं, from reaction of aldehydes with hydroxylamine. They form two compounds by loss of water molecule. If you take the reaction in shortcut mechanism, there is loss of water molecule. By loss of water molecule, they can form this compound called as aldoximes. We have two types of aldoximes. एक क्या होता है sin, एक होता है anti. Sin ये होता है पहला वाला, ये होता है anti. Sin का मीनिंग क्या है, H and OH in aldoximes if hydrogen and OH group are on same side of double bond. देखिए होता क्या है इसमें, कार्बन क्या है sp2 hybridise, N क्या है sp2 hybridise. तो when the group are, when we have both C and N are in same hybridization state, they are planar structure. sp2 hybridization, the structure is planar. In the planar structure, H and OH group are on same side is same. If H and OH are opposite, then it is anti. तो इन aldoximes क्या देखेंगे, HOH को, अगर वो सेम साइड पे तो क्या होगा sin, अगर वो अपोजिट पे है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे anti. That is aldoximes geometrical isomerism. R can be any group, maybe aliphatic, aromatic, कुछ भी हो सकता है, doesn't matter, आपको देखना है HOH को. If I take reaction of ketones, I will take now ketone with example CH3 CH2CO. It is 2 butanone, reaction taken same NH2OH. They form two kind of oximes, ketoximes CH3, one lone pair,
plus. We will get two oximes which is called keto-oximes, come from reaction of ketones. Compound तो same ही है, it is ketones, it is aldehydes. So this is called keto-oximes. Which are coming from reaction of ketones with NH2OH, we call them keto-oximes. How the reaction can take place of keto-oximes? इसमें क्या देखते हैं हम, ग्रुप विच इज सिन और विच इज एंटी. यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं है. वी हैव वन मोर, वन केस सपोज मिथाइल, अदर वी हैव इथाइल, वी कैन हैव प्रोपाइल, और वी कैन हैव डिफरेंट ग्रुप्स. देन keto-oximes we cannot have one group fix always, like we have hydrogen fix always in aldoximes. In keto-oxime we don't have any group fix. We cannot write them cis or trans or syn or anti directly. How to write for them cis or trans? In this case first one is called as syn and second is called anti. इसका रूल क्या है लिखने के लिए? इसमें क्या आप लिखिए, राइट लिख लीजिए, ठीक है. इफ द अल्काइल ग्रुप कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर and OH group are on same side, then it is syn, otherwise anti. If alkyl group coming first in alphabetical order, दो ग्रुप है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है. इथाइल कम बिफोर मिथाइल इन डिक्शनरी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस. तो इथाइल ग्रुप एंड OH आर ऑन सेम साइड, तो क्या बोलेंगे इसको? सिन. यहाँ पर क्या है? इथाइल एंड OH अपोजिट, तो इसे क्या बोलेंगे? एंटी. इथाइल एंड OH आर अपोजिट, so it is anti. Ethyl and OH on same side, so it is syn. I hope it is clear. Syn or anti. That's fine, I think. So it is oximes. We also can take this geometrical isomerism in the case of azo compounds. Azo compound means which have N double bond N. We call them azo compounds. In azo compound, like we take, they contain N double bond N bonds. Azo compounds. यहाँ पे क्या होता है? N is sp2 hybridized. We take two phenyl rings on same side or opposite side, lone pair. It is called syn, it is anti. The compound name is azobenzene. Let's short from N double bond NPH. It is azobenzene. The compound's name. In azobenzene, when pH or the common groups are on same side, it is syn. If the common group are opposite, then it is anti. That's all. This can be taken different kind of cases in geometrical isomerism. Now let us take the difference in properties of geometrical isomers. Now before we take properties of geometrical isomers, we can take some more structures in which the compounds can show geometrical isomerism. That structure can be called cumulines, spiro compounds, cyclic plus alkenes, cyclic plus cumulines, bicyclo compounds, cycloalkenes, heterocyclic compounds also can show geometrical isomerism. But all compounds cannot show, they have some limitations, some conditions in which these compounds can exhibit geometrical isomerism. Like first can take cumulines. What are cumulines? They have continuous double bonds. Cumulines they have continuous double bonds. They have cumulative double bonds. Cumulative or continuous double bonds. Now which kind of cumulines can show geometrical isomerism? They can have odd number of double bonds and terminal positions. Terminal carbons have different groups or atoms. Like we can take here this kind of cumulene, suppose taken if I write HCl, it is simplest. We can take cumulene after
replacing H by ClCl. So in this case, this kind of cumulins will not show geometrical isomerism because it is non-planar. The two pi bonds are perpendicular. So group taken here, one is outer plane and one is below the plane. So such compounds cannot show geometrical isomerism. It is the condition to show geometrical isomerism. But if I suppose take here Cl, then this compound can show geometrical isomerism because and it is cis type. That we have three pi bonds. Like one pi bond is outer plane, second pi bond in the plane, third pi bond again outer plane. The group will come in same plane. If I suppose take here and in this kind of HCl will not show geometrical isomerism because they are having even number 1, 2, 3, 4 double bonds. Cannot show geometrical isomerism. But if I suppose take here this compound will show geometrical isomerism and it is trans. It shows geometrical isomerism and it is trans. So उसमें आप condition क्या ध्यान रखेंगे? Allenes which have odd number of double bonds. पहला condition like one तो आपका alkene होता है simplest में, फिर होता है 3, 5, 7 such kind of allenes can show geometrical isomerism if their terminal carbons are having different groups or atoms. If their terminal carbon atoms have different groups or atoms, then such allenes can show or cumulins can show geometrical isomerism. You can also call them allene systems. Okay, that is first kind of compound taken, cumulins. Now next we can take spiro compounds. Spiro compound already discussed that they have one carbon common, quaternary carbon. So which kind of spiro compounds? They should have odd number of rings and terminal carbons or some positions have different groups at some positions which can show geometrical isomerism. Like if I suppose take here write here HCl, this system does not show geometrical isomerism. It has even number of rings because the two rings are perpendicular. So if these rings are perpendicular, the groups will be also perpendicular, means then one group is outer plane, one group is below the plane. But if I write here, they contain odd number like 3. HCl. This compound is cis type because the rings are perpendicular. So first, third ring again become same plane. So group also will be coming in same plane, opposite to the given plane of the given compounds. So this compound will show geometrical isomerism, cis type. It is trans. If I suppose take here no geometrical isomerism because they have even number of rings. तो इसमें क्या है, स्पाइरो कंपाउंड to show geometrical isomerism they should have odd number of rings, 3, 5, 7 type, or even single ring can show. Already explained to you cyclic compounds. So such kind of spiro compounds can show geometrical isomerism. Next it is cyclic plus alkenes combination. Cyclic plus alkenes can show geometrical isomerism. Let's see next example. Cyclic plus alkenes can show geometrical isomerism. इसमें क्या होता है कि we should have one ring, maybe 6-membered ring, but they should have different groups here. Like if I suppose take HCl, we can have one CH3 group or different group here. The two groups should not be same.
Such kind of compound can show geometrical isomerism. May not be exactly cis trans, but this can show geometrical isomerism. This compound will not show geometrical isomerism because these two are different, but this group sequence becomes same from either side. So the required condition, the end carbon should have different groups. That condition is not satisfied here. So this compound will not show geometrical isomerism. Next can be taken here. Cyclic plus cumulines. Cyclic plus cumulin can show geometrical isomerism if, like we can take here, we can take they should have different groups here, maybe Cl, something different. This should not be same from either side. In this case, this system taken here, when they have odd number of double bonds along this ring here, they can show geometrical isomerism, but this cannot show because it is non-planar. The two groups are perpendicular, the two pi bonds are perpendicular, so groups become to the plane of this group. This is perpendicular, so meaning what, the group taken here and here are not in same plane, so such kind of compound cannot show geometrical isomerism. Now next can be taken bicyclo compounds. Bicyclo compounds also can show geometrical isomerism. Like if you take example wise here, there are two rings. We can have hydrogen, hydrogen. When we have both hydrogen pointing in same direction, both downward, it is called downward, below the plane. This actually have structures. I am writing this kind of structures. This kind of bonds are representing the groups projecting out of plane, projecting out of plane or towards observer, and one taken dash, the groups are pointing below the plane, are pointing below the plane. Dash is below the plane, it is out of plane. So this is the group, both are pointing same direction, become cis type geometrical isomerism. Or if I suppose write next one group here, one is below the plane, one is out of plane, it is trans type geometrical isomer. So when we can draw such structures in which the groups can be pointing same direction or opposite directions, such compounds also can show geometrical isomerism. Next it is cycloalkenes. Cycloalkenes can show geometrical isomerism when they have at least 8 atoms or more. Let's see example wise. Nowadays cycloalkenes can show geometrical isomerism in some conditions, like I told, 3, 4, 5, 6 or 7 numbered ring, they do not show geometrical isomerism, while 8, 9, 10 or in bigger rings, they can show geometrical isomerism because angle strain part will be reduced in the bigger rings. When the twisting is there to form trans arrangement, so can they 8, 9, 10 numbered ring can show geometrical isomerism, and in such cases cis isomer is more stable than trans. While we take in bigger rings 11, 12, 13 numbered ring, trans is more stabilized compared to cis. For example taken like it is cyclooctane, 8 membered ring showing cis isomer. We have hydrogen on same side, carbon chain of identical groups same side. It is taken trans, we have hydrogen opposite, CH2 CH2 same side. It is taken trans, it is taken cis. That is, we can take here cycloalkenes showing geometrical isomerism. Heterocyclic compounds also can show geometrical isomerism, and the lone pair can be treated as one group. The lone pair can be treated as one group. Like if I take next example, we take next compound again,
cyclic compounds. In such case, if I suppose take here carbon chain, lone pair, one group can be taken maybe methyl or hydrogen, will show geometrical isomerism. Also can show geometrical isomerism. We can call this cis type. Cis type, it is trans, it is cis type. This kind of compound also can show cis or trans, or we can take geometrical isomerism. Such compounds can show geometrical isomerism apart from the alkenes or cycloalkenes, or you can take what? Oximes or azo compounds. We just written more compounds which can also exhibit geometrical isomerism. Now, before we go for the next point, we can take calculation of number of geometrical isomers. We get an exam question for finding the number of geometrical isomerism. For finding the number of geometrical isomerism, we can take some formulas, and be careful in using formulas because they are valid in some conditions. Now next can be taken calculation of number of geometrical isomers in polyenes. In polyenes means which are having double bonds alternating positions. In such cases we can have two kind of cases. पहला दिया है case 1, आप पूरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए. पहला दिया है a compound has n number of double bonds and ends of a polyene are different. In such case, what is number of geometrical isomers? 2 to power n. What is n here? N is number of double bonds which can cause geometrical isomerism. N also can be called stereogenic center, means which can cause stereoisomerism. So this n also can be called as stereogenic center in all the cases. Stereo center or stereogenic center. Asymmetric carbons और chiral carbons अभी आगे पढ़ाएंगे. और the positions which can show geometrical isomerism are called as stereocenter or stereogenic centers. So in compound having n number of double bonds and two ends are different, like example taken PH CH double bond CH single bond CH CH Cl. तो यहाँ पे क्या terminal position है, एक यहाँ पे PH और एक H है, यहाँ पे H और Cl. तो यहाँ पे क्या two ends are different. When we have two ends different of polyene, then in such compound what is number of geometrical isomers? 2 to power कितना है n? 1 2 3. We have 3 double bonds which can show geometrical isomerism. So आंसर कितना आएगा इसमें 8. अगला दिया है ऐसे ही when two ends are same. Like we can take example here. If I suppose replace one chlorine by one pH. So n becomes same. In such case, they will have less number of geometrical isomers. Formula क्या आएगा? 2 to power n minus 1 plus 2 to power n by 2 minus 1. And if n is odd number, यहाँ पे दो कैसे हैं? n even number और n odd number. तो क्या आएगा इसमें 2 to power n minus 1 plus 2 to power n minus 1 by 2. So this is formula for calculation of number of geometrical isomers in polyenes which is containing n number of double bonds. And the ends of a polyene are different. This formula can be applicable. Okay. So let us take 1 2 question of this last relation base. Like if I take here CH3CH double bond CH 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 C and double bond sorry CH C H3 CH CH double bond C CH3 H. So it is a compound polyene having end carbons with same groups. In this case, can you find the number of geometrical isomers? Try yourself. One example. Second,
Second case, find the number of geometrical isomers. One more case taken here. In the three cases, to find the number of geometrical isomers yourself. Try yourself. Now coming to solution part. In first case, देखिए इसमें क्या है? These groups are same, and we have how many number of double bonds now? 1, 2, 3, 4. Even number. So in such case, what is number of geometrical isomers? 2 to power 4 minus 1 plus 2 to power 4 by 2 minus 1. That's how much? 2 to power 3 plus 2 to power 2 minus 1 is 1. That's how much here? 8 plus 2, 10. So in first case, we have number of geometrical isomers 10. If your ends are different, they will have less number of geometrical isomers as compared to case when we were having ends different. Now in this case, next example, we have ends different, HCl, HCl. Sorry, same ends. So now we have how many double bonds? 1, 2, 3. So in this case, what is formula? 2 to power n minus 1 plus 2 to power n minus 1. That is 3 minus 1 by 2. That come how much answer here? 2 to power 2 plus 2 by 2 is 1. So 2 power 1 is same 2 only. So 2 to the 4 plus 2 is 6. It has 6 geometrical isomers. Got this point? Now next case, what should we answer? If we count here, this is not to be taken in counting. Why? Because on this carbon we are having two groups here. So this carbon cannot show geometrical isomerism. And then we will take only 2 for counting, 1, 2 double bonds only. And now one is H, one is entire different group here. So they will have 2 to power 2 only. 4 geometrical isomers. We told you that for counting the geometrical isomers, we take only those positions in which we have carbon atoms with different groups or atoms. यहाँ पे दो Cl हैं, same हो गए. इसे काउंट में नहीं, इसे काउंट नहीं करना है. क्या काउंट करेंगे? खाली दो डबल बॉन्ड को है, एक ये है और एक ये है. बिकॉज केवल इन पोजीशन की वजह से ही आपको क्या होगा इसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये दो ग्रुप सेम होने से क्या होगा? इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस कार्बन कैन नॉट कॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो बी केयरफुल के स्ट्रक्चर क्या दिया है. फॉर्मूला कैन बी वैलिड इन सम कंडीशंस, सो जस्ट बी केयरफुल. ओके, दैट्स दिस पॉइंट टेकन. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीमर्स और पॉलीइन्स which are having alternating single bonds and double bonds. Okay. Now next case can be taken one to simple example. Now a simple example of question. Simple example is given to you for calculation of number of geometric isomers. One very common question. They ask C2FClBrI. This compound can have how many number of geometrical isomers? C2FClBrI. So can take double bond equivalent in this case is 1. So it can be alkene derivatives. Question है, find the number of geometrical isomers. तो cis trans इसमें possible होगा नहीं. क्या इसमें possible होगा? EZ. आपको पढ़ाएंगे E और Z थोड़ी टाइम के बाद. But when say here this combination of pairs of the groups. Apply permutation combination. FClBrI. तो इसमें क्या होगा? एक में क्या होगा? आप ग्रुप को फिक्स कर दीजिए, FCl फिक्स कर दीजिए, चेंज द टू ग्रुप्स. इसमें I ऊपर Br नीचे, ऐसे कर दीजिए. अगले में क्या है? विल टेक सेकंड कॉम्बिनेशन FBr. नेक्स्ट विल हैव FI. कॉम्बिनेशन आपका डिफरेंट होगा पोजीशन वाइज. नाउ जो ग्रुप बचेंगे, क्या बचा? क्लोरीन आयोडीन. यहाँ क्या बचेगा? क्लोरीन ब्रोमीन. एंड दे विल हैव वन मोर पेयर इन विच दिस ग्रुप विल चेंज पोजीशंस. FBr फिक्स है तो हमने ICl को चेंज कर दिया. अगले में FI फिक्स है, BrCl को हमने चेंज कर दिया.
So we can have how many pair of geometrical isomers? 3 pairs, or total number of geometrical isomers in this case can be taken how much? 6. This compound has 6 geometrical isomers. So it's a very common question in examination, they have been asking, so be careful. So we will have 3 pair of EZ isomers. इन्हें बोलते हैं EZ, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं RS के बाद. RS कॉन्फ़िगरेशन आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, बिकॉज कुछ रूल्स हैं EZ के लिखने के लिए, आपको मैं इकट्ठे पढ़ाऊंगा RS के साथ में ही, ठीक है. तो ये हमारा हुआ कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. नाउ टेक प्रॉपर्टीज इन विच वी हैव डिफरेंस इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. Now next can be taken difference in properties of geometrical isomers. First can be taken, they can differ in physical properties. In physical properties we can take mainly 3 properties. One is taken your dipole moment, second taken boiling point, third taken melting points. On this point question have been asked polar non-polar molecules. So first we can take here property dipole moment. Dipole moment. Geometrical isomers can differ in dipole moments. See, we can have 2 kind of combinations. One taken is cis, one taken trans, where both the carbons are having same pair of the groups. In such a case, when you take the resultant dipole moment of cis is more than trans, means it is almost non-polar. Almost non-polar can take here. Resultant dipole moment is nearly 0, but in this case the resultant dipole moment is non-zero, because the polarity will be arising in molecule. Direction of dipole will be towards this side. This can be taken mu resultant this side, but in this case chlorine, effect of 2 chlorine is cancelling out because they are opposite, having angle between them 180 degree. Same for also hydrogen. So for this reason the trans isomer have in this case nearly 0 dipole moment, and cis will have non-zero dipole moment. ये कब होता है? अगर दोनों ग्रुप सेम होंगे, दोनों C के पास ये HCl है, यहाँ भी HCl है, अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है? सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट क्या होगा? हमेशा ज्यादा होता है ट्रांस के साथ कंपैरिजन में, बिकॉज ट्रांस में सिमेट्रिकल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा एंड डायपोल ट्राई टू कैंसिल आउट. बट अगर आपको दिया है केस डिफरेंट है, एक केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक सी के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में क्या होता है कि ट्रांस विल हैव हायर डायपोल मोमेंट देन सिस. एग्जांपल सपोज इफ आई राइट हियर CH3 CCl3 HH CH3 CCl3 HH, ये सिस है, ये ट्रांस है. HH अपोजिट टू ट्रांस, ये HH कहाँ पर है? सेम साइड पर, तो क्या होगा? सिस होगा. अब यहाँ पर क्या है? ग्रुप डिफरेंट है. यहाँ पर CH3 का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. क्यों? Ca कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज. यहाँ पे कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज sp2. इट इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो डायरेक्शन डायपोल टुवर्ड्स कार्बन. और यहाँ पर कहाँ होगा? टुवर्ड्स क्लोरीन साइड. यहाँ पे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, बिकॉज ये बॉन्ड कम पोलर होता है. यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन डायपोल विल बी अपोजिंग एंड हाइड्रोजन विल नॉट अफेक्ट मच. तो इन दिस केस बोथ आर नॉन पोलर. both are polar molecules. In both the case, the resultant dipole moment is non-zero. Both are polar molecules, but dipole moments of trans become higher than cis because one carbon have electron donating group, one carbon have electron withdrawing group. तो dipole will add up, additional dipole will take place. यहाँ पर क्या है? dipole का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो dipole try to cancel the effect of second dipole to some extent. So for this reason, in this case, cis isomer will have lower dipole moment than the trans isomer. So first can be taken dipole moment case. Two kind of case combination possible. If you take resultant dipole moment taken here cis is more than trans. यहाँ पे क्या है? trans is more than cis. तो कोई भी आपका रूल फिक्स नहीं है कि ट्रांस का ज्यादा है कि सिस का ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट. आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे.
अगर दोनों में पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होता है तो सिस का ज्यादा होता है। अगर एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सी के पास, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप होंगे, बाकी दो ग्रुप सेम होंगे, तो इस केस में क्या होता है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा सिस के कंपैरिजन में। ठीक है, ये वो आपका प्रॉपर्टी डायपोल मोमेंट का। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द मॉलिक्यूल्स, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन टेक हियर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, dipole dipole interactions, van der Waals interactions, if nothing is there, molecular weight of compound, molecular surface area, can take boiling points. They depends on some factors like they are directly proportional to molecular weight or molecular surface area for isomeric compounds, surface area, or can take strength of hydrogen bonding, dipole dipole interactions, or van der Waals attractive forces. Now if it is taken in your geometrical isomers, they will have same molecular weight, they also have nearly similar surface area, hydrogen bonding possibility will be nearly same, van der Waals force attractions can also be similar. We can take main factor here dipole dipole interactions. So in boiling points of geometrical isomers, whichever isomer will have higher dipole moment, in this case will also have higher boiling points. In general, for cis isomer, boiling point is more than trans. If we have symmetrical type, same geometrical isomer, like example taken, groups are same, CH, Cl, CH, Cl type compound, but trans can be more than cis if the dipole moment is more. It is in general. Now next can be taken melting point property. Melting points. Melting points will depend on the packing of molecules. Depends on close packing. Close packing of molecules in solid state. Melting point depends on close packing of molecules in solid state. So we can take here melting point will follow the order trans is more than cis. It's always almost. The reason trans isomers are symmetrical, they can fit more closely in solid state, whereas cis isomers are unsymmetrical, they cannot fit more closely in solid state. So trans isomer being symmetrical can fit more closely in solid state, so trans isomer will have higher melting point than cis. It is almost always. Now next we have taken some chemical properties of geometrical isomers. Now next we can take chemical properties of geometrical isomers. In chemical properties, first can be taken like here, effect of heat. We take two very common geometrical isomers, like one taken is called maleic acid. It is maleic acid. It is cis isomer. On heating, it readily undergo dehydration to form the compound called as maleic anhydride by dehydration. Maleic anhydride. On heating, we get maleic anhydride, while we take in same condition we take trans isomer. Cis form is called maleic acid, trans is called fumaric acid. It is fumaric acid, trans isomer called fumaric acid. On heating in same conditions, no effect. But
on heating to high temperature, it decomposes to it undergo dehydration to give same product only, maleic anhydride. यहाँ पे रिएक्शन इजी होता है, यहाँ पे रिएक्शन डिफिकल्ट है. क्यों? यहाँ पर दोनों COOH पास में है तो वाटर निकालना इजी रहेगा इस केस में. OH से एक COH से OH और एक यहाँ से H. यहाँ से क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इजियर फॉर्मिंग मैलिक एनहाइड्राइड. यहाँ पे क्या है? दोनों COH अपोजिट में है तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन डिफिकल्ट होगा. यहाँ पे क्या डिहाइड्रेशन डिफिकल्ट होगा? अगर प्रोडक्ट बनेगा सेम तो क्या है? ऑन हीट टू हाई टेम्परेचर first they have to break the pi bond and then rotation should take place. After rotation the two COH can come on same side, then they can form this product maleic anhydride. प्रोडक्ट दोनों सेम है, मैलिक एनहाइड्राइड ही बनेगा दोनों केस में, मैलिक से या फ्यूमेरिक एसिड से. व्हाट पॉसिबिलिटीज देयर? पॉसिबिलिटी ये होता है इसमें कि यहाँ पर क्या है? हीट करने पर पहले पाई बॉन्ड ब्रेक कराएंगे. इफ आई टेक द पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म वाइज दोनों ग्रुप तो सेम है तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक प्लेस. तो दे कैन फर्स्ट फॉर्म सिंगल बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अब सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है? फिनोमेना ऑफ कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है. तो क्या होगा इसमें कन्फॉर्मेशन में? रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड कैन टेक प्लेस, देन टू COOH कैन कम ऑन सेम साइड. यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर टू COOH सेम साइड पे आएंगे तो क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी कम होता है. बट बनेगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एनर्जी विल बी मोर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड देन दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड एंड देन दे फॉर्म दिस प्रोडक्ट. अगर हम देखें सिंपली स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सिस. क्यों होता है ऐसा है? बिकॉज इन ट्रांस आइसोमर द बल्की ग्रुप्स आर अपोजिट, दे हैव लेस रिपल्सन, लेस स्टेरिक इंटरेक्शन और रिपल्सन. By less repulsion, stability is more of trans as compared to cis isomer. Stability is more of trans as compared to cis isomer. So trans, अब cis is stability less, तो इसमें तो easy होता है रिएक्शन. और यहाँ पे क्या है? उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है. और 2 COH मेन का इसके रीजन है. 2 COH कहाँ पर है? अपोजिट है, तो उनको सेम साइड डालना पड़ेगा पहले. तो इसको हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पर. फिर 2 COH एक तरफ आएंगे, सेम साइड में आएंगे, फिर डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, फिर पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर. दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम द सेम कंपाउंड टेकन फ्यूमेरिक एसिड. दिस इज वन कॉमन. द एविडेंस कैन बी टेकन फ्रॉम फॉर दिस पॉइंट, लाइक एविडेंस कैन बी टेकन लाइक ऑन हीटिंग cis 2 butene, it convert to mixture of trans 2 butene and cis 2 butene at equilibrium. On heating plain pure cis 2 butene, they give mixture of cis and trans 2 butene at equilibrium. कैसे होता है? इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन होगा मैकेनिज्म में. What is cis 2 butene if I write structure wise? मिथाइल H. तो यहाँ पे कार्बन क्या है? दोनों सेम है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड नॉन पोलर है. तो when the bond breaking will take place, the bond breaking will occur by free radical mechanism. सिंगल बॉन्ड आएगा, रेडिकल टाइप बनेगा डाई रेडिकल. यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा इसमें? रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड. आफ्टर रोटेशन क्या होगा इसमें? The 2 methyl will go opposite. For this case, the driving force can be taken what? The 2 bulky methyl groups, they will have more repulsion in this cis arrangement. So what happens? They will move opposite, and then this conformation type arrangement will give cis 2 butene back, and this can give trans 2 butene after formation of pi bond using this unpaired electrons. That's mechanism for this conversion of cis 2 butene to trans 2 butene mixture coming at equilibrium in this case. I hope it is clear. That can be taken one chemical property.
One more property can be taken, especially in case of this geometrical isomer, maleic acid and fumaric acid, about Ka values. कैसे होता है? Let us see this point. क्वेश्चन आपको दिया है कंपेयर करने के लिए, आपके दो एसिड हैं, एक दिया है maleic acid और एक इसका दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ट्रांस आपका इसका दिया हुआ है फ्यूमेरिक एसिड। अब मैंने देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन प्लस, देखिए दोनों क्या है, दोनों ही आपके डाइबेसिक एसिड क्या है, दोनों डाइबेसिक हैं, दोनों में आपका फैक्टर वैल्यू 1 है Ka1। This can give first HN to give Ka1 expression. Ka1 dash. It is called maleate acid ion. Give second hydrogen plus ion. We can take expression of Ka2 maleate ion. Losing second hydrogen plus ion, Ka2 expression. Fumarate ion. It is called fumarate acid ion. इसमें क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसमें आपको था ना ऑर्डर Ka1 और Ka1 डैश विच इज हाइयर 1 बिट, सेकेंड बिट लिखा है Ka2 एंड Ka2 डैश विच इज हाइयर। Ka1 Ka2 दिया है, मैलिक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट्स K1 स्टेप 1 में, K2 स्टेप 2 में, और Ka2 और K2 डैश दिए हुए हैं क्या फॉर द Ka1 dash and Ka2 dash are given the dissociation constants of the fumaric acid. ये आपका सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। आपको बताना है इसमें किसका Ka1 मींस दोनों में कौन सा एसिड स्ट्रांग है, मींस जिसका Ka1 बड़ा होगा वो एसिड स्ट्रांग होता है। तो बताना है K1 और K1 डैश में विच इज हाइयर, और आपको बताना है Ka2 और Ka2 डैश में विच इज हाइयर। ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। Now coming on solution part, हमने क्या बोला कि एसिड स्ट्रांग कब होता है, if they form stable conjugate base. तो we will compare in this case the stability of conjugate base in both the cases. We will compare the stability of conjugate base in both the cases. How to compare the stability of conjugate base? अब देख लीजिए, देखिए in first case when this give hydrogen plus ion they form conjugate base. This conjugate base can take part in hydrogen bonding. यहाँ पे जो H होगा उससे क्या हुआ, they will take part in intramolecular hydrogen bonding. By this hydrogen bonding what happen, this maleate acid ion is more stable compared to fumarate acid ion. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, डोंट थिंक कि ये यहाँ से बन जाएगा। यहाँ पे H कहाँ लगा है, C से, नो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, स्टेबिलिटी कम होगा फ्यूमेरिक एसिड आयन का। तो stability means when you get more stable conjugate base then the compound is more acidic. So step 1 में क्या होगा, Ka1 is higher than Ka1 dash, indicating for the loss of first hydrogen plus ion malic acid is more stronger as compared to fumaric acid in acidic strength. For second step we have two COO negative on same side, they are bulky groups, they will have more repulsion, by more repulsion stability will be less. यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट में है तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसमें। तो व्हेन इट इज मोर स्टेबल
That means the loss of second hydrogen ion is easier in this case. So fumarate acid ion is more, fumarate acid ion is more stronger as compared to maleate acid ion to give second hydrogen plus ion for losing second H ion. Moreover, this hydrogen to be removed is involved in intramolecular hydrogen bonding. जिस H को बाहर निकलना वो कहाँ इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. तो इसका लॉस क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. अगर H ion का लॉस डिफिकल्ट है तो हम क्या बोलते हैं, acid will be less acidic or weaker acid. So for second step, maleate acid ion is weaker as compared to fumarate acid ion in the strength. So I hope it is clear this point. So it is about your topic taken geometrical isomerism. Now next topic can be taken about optical isomerism, the area where the student feel more difficulty. So let us start now optical isomerism.